Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of daily news analysis. What we do from Monday to Friday. In this newspaper analysis, we discuss about all the important news from all major newspaper. But we discuss about the Hindu Indian Express, but we also take lots of news from AIR, Press Information Bureau, which is PIB, and different government website. So, what exactly we discuss in newspaper analysis? But before we start, please let me know if my voice is audible. Am I visible to each and everyone? Am I audible? Am I visible to everyone? Okay. So, my humble request to everyone, if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so we'll get the notification of all our PRATHAM Test Prep mentors. One more thing that is important to understand is why newspaper is important, because it tells you about the information like what is happening around us, and the best source of current affairs is the newspaper, because it it will tell you about the national news, international news, economy based news, summits and conference, political news, science and tech, and apart from that we also discuss about Supreme Court and High Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament, which we also discuss. Here is the quote that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. And we'll ask you the questions of the day. We'll ask you the 5 questions that will tell you about the things which is very important to understand, because once you have gathered the information, then you have to solve the questions that is based on multiple choice questions. So multiple choice question is very important. And quick tips. So very first news is why some nations have paused UNRWA. So very first thing that we have to understand is UNRWA is UN Relief and Works Agency for Palestinian refugees in the Near East. So basically UNRWA. So UN officials Sunday urged country to reconsider their decision to suspend the funding for the United Nations Agency for Palestinian Refugees, assuring that it would take strict action against any staff member found to be involved in Hamas, which is a militant group, October 7 attack on Israel. So the officials said 2 million Palestinians in Gaza are dependent on UNRWA services that would be scaled back by February if the funding is not restored. And उसके साथ साथ US और उसके 8 other countries हैं which provided more than half of UNRWA 2022 budget cut the money after Israel accused some of the agency staffer of involvement in the October 7 attack. UNRWA मैंने बता दिया, इसकी establishment UNRWA की कब हुई थी. Whenever such kind of news, make sure that you should know about the background of the story, and the background is that UNRWA, it is United Nations Relief and Work Agency for Palestinian refugees. So UNRWA, it was established in the 1949 to provide assistance to about 7 lakh Palestinians who were forced to leave their home in the what is now Israel during in 1948, जो हमारा अरब इज़राइल वॉर था, वॉर उसके बाद. So UN की जो एजेंसी है that operates in Gaza, the Israel occupied West Bank, Lebanon, Syria, Jordan के इलाके में. So according to its website के according हम देखें,
So it runs education, health, relief and social services. So UNRWA is funded almost entirely by voluntary contribution by donor states like the US. So we'll give you the more information कि यहाँ पे न्यूज़ में क्यों थी, मैंने बता दिया आपको. रिसेंटली इसराइल ने अक्यूज किया सम ऑफ द एजेंसी स्टाफ मेंबर टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अक्टूबर 7 अटैक. उसके बाद UNRWA मैंने बता दिया आपको 1949 में इस्टेब्लिश हुई थी. And the UN agency operates in Gaza and the Israel occupied West Bank as well as Lebanon, Syria and Jordan. Now we talk about the next is news. आज जो डेट होती है वो होती है इकोनॉमिक सर्वे की. So economic survey union budget 2024, why economic survey won't be presented on January 31st this year. ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स से है. So you should know about the what is economic survey is, why this year, unlike every year, the economic survey will not be presented on January 31st, a day before the budget 2024 presentation. So ये जो आप इंसान आप देख रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में इनको, ये इनका नाम क्या है ये आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में. तब तक सोचो इसका नाम क्या है. ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, राइट. अभी मैं आपको बता दूंगा वैसे इन लोग का अपॉइंट किया गया था, बट आपको ये बताने कि इनका नाम क्या है. सो इकोनॉमिक सर्वे दैट वॉन्ट बी प्रेजेंट, क्यों? और बजट जो है वो इंटरिम बजट को कल पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं शी विल पब्लिश. बट व्हाट वाज द रीज़न विल नो ईच एंड एवरी थिंग्स इन द वेरी डिटेल. फर्स्ट थिंग, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन विल बी प्रेजेंटिंग द इंटरिम यूनियन बजट. ये क्या होता है मैं बता दूंगा अभी. On February 1st, Thursday, one of the most significant part of the Parliament budget session is the presentation of economic survey on January 31st. The very first thing that you should understand is economic survey is a previous financial year and the budget is for the forthcoming financial year. That is for the forthcoming financial year. That is the difference between economic survey and budget. So in short, if you talk about why the budget is not going to publish full budget, interim budget कल पार्लियामेंट में पेश होगी. So there are 3 sessions in the parliament. One is budget, उसके बाद monsoon and then winter session. हमारे Parliament of India having the 3 sessions, budget, monsoon and interim. Now we need to understand is why this thing. देखो, this year the economic survey will not be presented a day before the interim budget is announced by the finance minister. The reason behind is that this is not a full budget but an interim budget being presented by the government. तो पहले आपको समझना होगा इकोनॉमिक सर्वे क्या है. बजट के बारे में एक डिफरेंट सेशन होंगे कल. पहले बजट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे उससे मैं आपको एक स्पेशल सेशन होगी बजट की जो माइट बी आपकी डीप डाइव सेशन में इस बार होंगी. सो इकोनॉमिक सर्वे इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज प्रेजेंटेड बाय द सेंटर अ डे बिफोर द यूनियन बजट and it is a comprehensive annual report which displays the performance of the Indian economy in the past fiscal year, right, that highlighting the highs and lows for the better insight for the future, right. वो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है. इंडिया का फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे द टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्शन जब हमारे इंडिया में होती हैं 1950 to 51 के टाइम में ये हुई थी. उसके बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे कि फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब पब्लिश हुई थी. सो इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट कौन करता है? बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट कौन करता है? बेसिकली चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र चाहिए, जिनका नाम अभी मैं आपको बता दूंगा. ये कौन है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र? ऑन द ईव ऑफ बजट, बजट से एक दिन पहले जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं वो चीफ इकोनॉमिक सर्वे को बताते हैं. सो गिविंग अ हाईलाइट ऑन हाउ द प्रीवियस बजट वर्कड एंड प्रोवाइडिंग इंसाइट ऑन व्हाट कुड कम नेक्स्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी. सो अब आपसे मैंने पूछी थी कि इंटरिम बजट क्या होता है. इंटरिम बजट इज सीन एज अ स्टॉप गैप फाइनेंशियल प्लान ड्यूरिंग एन इलेक्शन ईयर. जिस टाइम में इलेक्शंस होते हैं उस टाइम के में क्या होता है कि इंटरिम बजट को क्या करते हैं, वो रोक देते हैं. मतलब जो बजट होता है फुल बजट को वो पब्लिश नहीं करते हैं.
So it aimed at meeting immediate financial needs before a new government is formed. So the full-fledged union budget will only be released after the elections, which will take place between April and May. So ये जो है आपका जो फाइनेंशियल ईयर प्लान होता है, स्टॉप गैप फाइनेंशियल प्लान होता है इलेक्शन ईयर, क्योंकि 2024 में भी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इलेक्शन से पहले ऐसा करते हैं. नाउ वाई इज नो इकोनॉमिक सर्वे ऑन जनवरी 31 को क्यों नहीं हुआ? देखो इसका मेजर रीजन क्या है. Since this is not a full-fledged budget session, economic survey will not be presented this year. In fact, no major announcement or changes in policy will be announced on February 1st. Since जो हमारे सीतारमन जी हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर will only be presenting the interim budget. मतलब लास्ट ईयर की जो बजट है उसी को वो अपना कहीं ना कहीं दिखाएंगे. ऐसा क्यों? उसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, because the Lok Sabha election 2024 are set to take place this year in April, May, and which is why a full budget is not being presented by Finance Minister Sitaraman. So a complete budget and economic survey will be presented in July when the results are declared and a new cabinet is appointed. So the survey document will not be out tomorrow. So कोई भी documents होंगी वो कल नहीं आएगी. द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज रिपोर्ट टाइटल इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू ऑन मंडे जनवरी 29 गिविंग द टॉप हाईलाइट्स इन इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द पास्ट 10 years. ऑलरेडी इन्होंने एक इंडियन इकोनॉमी का रिव्यू रिलीज कर चुके हैं वो मंडे को, जनवरी 29 को, जिसके बारे में हम एक स्पेशल सेशन लेंगे जिसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. बिकॉज दिस इज न्यूज़पेपर एनालिसिस. सो न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम न्यूज़ के सारे कंटेंट को हम डिस्कस करते हैं. So our purpose is not to discuss only particular one topic. We'll discuss about most of the topic so that students must aware about the things. Now, अब आपसे मैंने पूछी थी कि हमारे इंडिया में फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे जो है कब प्रेजेंट किया गया. देखो, जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे था इंडिया का वो प्रेजेंट हो 1950-51 के बीच में. So economic survey is a report of the government on the state of economy of the country during the last 1 year. It is prepared by Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance. Chief Economic Advisor release the economic survey. Usually, जो इस साल नहीं हुई. Additional information की बात करें, it was released along with the union budget, but बाद में क्या हुआ? It was separated from the budget in 1964 to give a better understanding of budget proposal. So it is released one day before the union budget. Now it is presented in 2 volumes. So it has no constitutional backing. Its finding and suggestion are not binding on the government. जो फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे गवर्नमेंट का मिस्टर जे अंजारिया एंड द करंट चीफ एडवाइज़र जो हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, नहीं जी ये नहीं हैं, ये प्रीवियस थे पहले, तो ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र नहीं है. तो मैं आपको बता दूं ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र नहीं है, ये पहले थे. 2022 में गवर्नमेंट ने जिनको अपॉइंट किया था ये रहे हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. तो देखो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है बेसिकली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देख सकते हो आप. 28 Jan 2022 लास्ट ईयर की है ये, लास्ट ईयर सॉरी. सो डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरम वो एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. Government has appointed V. Ananta Nageshwaram as the Chief Economic Advisor, and today he has assumed charge. So prior to this appointment, Dr. Nageshwaram has worked as a writer, author, teacher and consultant. He has taught several business school and Institute of Management of in India and Singapore for the published extensively. ये इनके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन है. ये नाम आप याद रखेंगे, डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरम एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. Now the next article here we talk about the pros and cons of simultaneous elections. So what are the various benefits of the India in Lok Sabha and state elections at the same time? So obvious that मैंने ये कुछ similar articles मैंने आपसे discuss की थी कि obvious सी बात हमारे इंडिया में we're having the more than 135 crore population. So आप देख सकते हैं कि इससे हमारे कंट्री की जो हमारी जो बजट होती है, जो हमारी कंट्री का अपना एक फिस्कल डेफिसिट है, वो हमारा क्या होता है,
कम या ज़्यादा होता है, मतलब एक स्टेट के पास एक पर्टिकुलर फंड होती है, राइट, और स्टेट के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड जो होता है वो बेसिकली स्टेट को बताना होता है, मतलब स्टेट अपने पे खर्च करती है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प में। तो ऑब्वियस सी बात है कि शॉर्ट अगर देखें इस आर्टिकल का क्रक्स यही है कि इलेक्शन से बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के पास और इसी सारी स्कीम्स होती हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं कि टू सेव साइबर इंफ्रा गवर्नमेंट में पुश मोर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर इज बिहाइंड द फ्रेमवर्क। बेसिकली देखो इसमें क्या है, asserting that there has been significant progress over the last few years in the development of indigenous cybersecurity products and solution, Center is expected to recommend enterprises, especially those in critical sector like banking, telecom, energy sector, discom companies से कहते हैं, to use only security products and service developed in India. So the government has drawn up a guiding policy called the National Cyber Security Reference Framework, जिसे हम कहते हैं NCRF. So it attempts to provide an implementable measure which clear articulation of rules and responsibility for cybersecurity based on existing legislation, policies and guidelines. So the action comes as India faces a barrage of cybersecurity related incidents. Most recently, a high-profile attack that on the systems of AIIMS Delhi in 2022, which posed a major challenge to New Delhi's national security imperatives. So the framework has been drawn up by the National Critical Information Infrastructure Protection Center, which is NCIIPC, which reports to the Prime Minister's office with support from the National Cyber Security Coordinator. Right? So एक adequate resources होनी चाहिए, which must be allocated for the cyber security, and these should be distinct from IT sources based on the global best practice. चलो जी, next one, public private partnership to grow seafood outside the sea, already discussed, हम कर चुके हैं. Now आपके सामने आज कुछ ज़्यादा important articles आपके सामने थी नहीं, so that देखो permanent members of UNSC, which is United Nations Security Councils, UNSC. So which means FRAC, which is France, Russia, America, China and England. So ye the mnemonics you should learn. Next one, official language of UN, जिसमें Chinese, English, Russian, Spanish, ये सारे फेसर्स विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स वी कैन लर्न द मेनी थिंग्स. और उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत, उसको लर्न करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, सब खाओ टमाटर सब लो मज़े. S stand for slave, K for खिलजी, T for तुगलक, S for सैयद, L for लोधी and then Mughals. There's few students who asked about how to make notes of current affairs, any particular topic. देखो ऐसे हम नोट्स बना सकते हैं, मेरे सेल्फ नोट्स बने हुए हैं जो once I was preparing for the exam, तो उस टाइम के important articles of the constitution in polity में. Article 15 discrimination, 17 untouchability, freedom of speech and expression, 19 Article 24, 124 talking about Supreme Court, 214 High Court. Article 51A is talking about fundamental duties. Article 343, 351 about Hindi language. Article 24 is talking about children below 14 years cannot work. और ये सारे article related to emergency, national emergency, state emergency and financial emergency. Now questions of the day. Exercise Desert Night is conducted by the Indian Navy, Indian Army, Indian Air Force, Indian Coast Guard. So this is Indian Air Force, the right answer. Exercise Desert Night conducted by the Indian Air Force along with the French Air and Space Force, UAE Air Force, the purpose to conduct joint military exercises. With reference to the Ayodhya Ram temple, consider the following style.
फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी, ट्रेडिशनल नगाड़ा स्टाइल में बिल्कुल सही है. टोटल 7 मंडप्स है, नहीं, ये गलत है. नो आयरन इज यूज्ड एनीवेयर इन द राम टेम्पल इज द करेक्ट वन. सो इसमें 5 मंडप्स हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप एंड कीर्तन मंडप. So how's the childhood from the Bhagwan Shri Ram, Ramlala in the main sanctum sanctorum in the Shri Ram Darbar on the first floor. Banjaras during the medieval period of Indian history that were generally agriculturists, warriors, weavers and traders. So Banjara जो थे that are known to be a traders, yes, ये traders थे. So there were many different tribal groups in medieval India. Some were hunter-gatherer nomads. One such type of nomadic groups was that of Banjaras. So they were the most important traders nomads during the medieval period, and their caravan was called Tanda. So Sultan Alauddin Khilji market regulation system that could become successful, mainly because the fact that he relied heavily on the Banjaras to transport grains to the city market. जो खिलजी था उसकी market regulation policy हम आज भी present market में हम use करते हैं. Shekhri and Bhumija are the terms associated with. ये टेम्पल के आर्किटेक्चर्स डिज़ाइन होती है, जो नगाड़ा स्टाइल के टेम्पल्स होते हैं उनमें होती है शेखरी एंड भूमिजा. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, following had first deciphered the edict of Emperor Ashoka. So here is the answer would be here James Prinsep. So Ashoka, it was period from 269 to 232 BC. He was son of Bindusar. His other names were Devanpriya and Priyadasi. He was crowned to the throne in 269 BC. And we can say he was famous for the Battle of Kalinga, which is present in Odisha, fought in 261 BC. James Prinsep जो थे was the first to decipher Ashoka edict inscription in 1837. So dear friend, this is all about the session, and we'll tell you about, like, tomorrow will be the budget session. नहीं होगी तो एक जो डॉक्यूमेंट जो भी गवर्नमेंट पब्लिश करेगी, वैसे पब्लिश कर चुकी है 29th को, but we'll discuss if it required in much detail. Thank you so much for joining with us. We'll meet you tomorrow for the same time. Till then, bye bye and take care.